Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. Online lectures. Biology grade 9. Lecture number 5. Chapter number 4. Cells and tissues. Students, the tasks that we are going to discuss in this lecture are ribosomes, mitochondria and plastids. Students, bring your biology books, open them and write date, day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Ribosomes. The topic that we are going to discuss first is ribosomes. Ribosomes are tiny granular structures that are either floating freely in the cytoplasm or are bound to endoplasmic reticulum ER. Each ribosome is made up of almost equal amount of proteins and ribosomal RNA that is represented by small r and capital RNA, that is ribonucleic acid. So R for the ribosomal RNA, and RNA states that ribonucleic acid. So ribosomes are basically tiny granular structures. These are small structures that are like grains, यानी कि दानों की तरह के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, दानों की तरह की ये छोटी छोटी साख्तें होती हैं that are either floating freely in the cytoplasm or are bound to the endoplasmic reticulum. या तो ये freely cytoplasm में मूव करेंगे, cytoplasm of the cell में ये complete फ्रीली मूव करेंगे साइटोप्लाज्म में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली सेल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल की, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ can be used as a transportation system of the eukaryotic cell. So each ribosome is made up of almost equal amount of proteins and ribosomal RNA. If we discuss about the composition of the ribosome, here you can have a question, write down the composition of ribosomes. So you can write the composition of ribosomes as that each ribosome is made up of almost equal amount of protein and ribosomal RNA. तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक जो राइबोसोम है उसमें जो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन मौजूद होती है और इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए मौजूद होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, इन दोनों चीज़ों से ये मिलकर बना होता है. Ribosomes are not bound by the membranes and so are also found in the prokaryotes. जो राइबोसोम्स हैं बेसिकली दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती. इसी वजह से ये ईजिली प्रोकैरियोट्स में भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती. ऑल द ऑर्गेनेलीज आर समवट सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म. सो यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, वी कैन हैव अ डिफरेंस regarding the ribosome in eukaryotes and prokaryotes. The ribosomes of eukaryote are slightly larger than the prokaryotic ones. Ribosomes are basically the site of protein synthesis. Now if you have a question that write about the function of ribosomes, write about the function of ribosomes or what are the function of ribosomes, so you can write its answer as ribosomes are the site of protein synthesis. यानी कि ribosomes वो sites हैं जहाँ पर protein synthesis होती है, यानी कि proteins को बनाया जाता है, proteins का जो उनकी formation का काम है वो complete होता है. Protein synthesis is extremely important to cells and so large number of ribosomes are found throughout the cells. So when a ribosome is not working, it disassembles into a smaller units. अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और पूरे सेल की जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस है वो इसी के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की कम्बिनेशन से बनती है. यहाँ पर आपको स्लाइड में लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट दिखाए गए हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पर भी पिक्चर यहाँ पर मौजूद है. तो अब ये लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट जब कंबाइन करते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को फंक्शन करते हैं. लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन ख़त्म होता है या राइबोसोम्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, ये एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, दोनों स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. सो द protein synthesis is basically the most important part of the cell as
almost all of the function of the cell need proteins for their functioning. So the ribosome has importance in such a way that protein synthesis is extremely important to the cell. So a large number of ribosomes are present throughout the cell in the cytoplasm, whether they are attached to the endoplasmic reticulum or whether they are freely floating. So you can have a long question about this. Write a note on ribosomes. So if you have a question like this, write a note on ribosomes, so you can write the full topic with its diagram. So okay students, you have to mark all these questions on your book, page number 61, 62, and further the topic that we are going to discuss. So you have to mark all these questions, write all these questions on your book, so that you can have an idea about these questions. The next one is mitochondria. Mitochondria are basically the powerhouses of the cell or the energy house of the cell. Mitochondria, single mitochondrion, are double membrane bound structures found only in the eukaryotes. ये double membrane bound होते हैं, यानी कि दो मेम्ब्रेन जो हैं वो इनको बाउंड करती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होंगे. These are the site of aerobic respiration and are the major energy production centers. अब ये बेसिकली जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल है, ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि जितने भी एरोबिक रिएक्शंस होते हैं, aerobic means in the presence of oxygen. So all the aerobic reactions or all the aerobic respiration reactions take place in this powerhouse of the cell or in this mitochondria, and these reactions are taking place within the matrix of the mitochondria and are the major energy production center, and this mitochondria is the major energy production center. From this the energy can be transferred to the cell. The outer membrane of the mitochondria is smooth, but the inner membrane form many infoldings called the cristae or the singular crista in the inner mitochondrial matrix. If we discuss about the two membrane that are bounded that bounds the mitochondria, so we can say that the outer membrane is smooth throughout the mitochondria, while the inner membrane have some infoldings that are formed like somewhat zigzag manner or having outward and inward portions that form cristae or a singular crista, and they contain mitochondrial matrix. So this serves to increase the surface area of the inner membrane. So these infoldings having outward and inward foldings can increase the surface area of inner membrane, so that the membrane bound reaction can take place on larger surface area. As the surface area is large for the reaction, so the reaction can take up more easily and more speedily. So you can have this picture on your page number 62, the inner membrane, outer membrane, cristae, and the blue colored matrix that is present within these infoldings. So within this matrix we have discussed that aerobic respiration reactions take place. So if we take up the example of reaction that are taking place in this matrix, so we can say that this is oxidative phosphorylation, यानी कि oxidative phosphorylation का जो reaction है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, और बहुत सारे reactions होते हैं. We are just having single example, oxidative phosphorylation. अब oxidative phosphorylation को basically कहा क्या जाता है, यहाँ पर ये एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है. इसमें होता क्या है, इसमें एक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ NADH, और वो NADH जो है वो एंजाइम उसको कंज्यूम करता है और उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP में कन्वर्ट कर देगा. सो दिस इज़ बेसिकली द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और Krebs cycle. So this is oxidative reaction that take place within the matrix of this mitochondria, and the product that produce is basically ATP, that is adenosine triphosphate. So this adenosine triphosphate is the energy that is used by the cell in many further reactions. Mitochondria have their own DNA and ribosome. So this is the first organelle, or this is the single organelle that can have its own DNA and own ribosomes for the protein synthesis. So the ribosome of mitochondria are more similar to the bacterial ribosomes than the eukaryotic ribosome. So if we discuss about the similarity between the ribosomes of mitochondria and the eukaryotes, so they have more similarity to the bacterial ribosomes than the eukaryotic ribosomes.
now you have a long question about mitochondria. If you have a question that write a note on mitochondria, then you have to explain this full topic with its diagram. And if you have just the function of mitochondria, so you can write first three lines of these two one of these two paragraphs, the first three lines as the answer of function of mitochondria. And if you are asked that write down or explain the structure of mitochondria, then you will write the four lines that are the second paragraph, the outer membrane of a mitochondria till the कैन टेक प्लेस तक, यानी कि आप आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से लेके कैन टेक प्लेस तक लास्ट जो 4 लाइनें हैं वो इसमें आप राइट करेंगे, जो कि सेकंड पैराग्राफ बनती हैं. सो यू कैन हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज. अब ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं दैट ओनली अकर इन द सेल्स ऑफ द प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लाइक एल्जी. अब ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं प्लास्टिड्स, और या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट या एल्जी में मौजूद होंगे, जो कि बेसिकली समवट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स रखते हैं या रिएक्शंस जो हैं उनमें प्लांट जैसे होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ plastids that are basically chloroplast, leucoplast and chromoplast. So now we'll discuss them in detail about chloroplast, leucoplast and chromoplast. Like mitochondria, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी प्लास्टिड्स की जो फर्स्ट टाइप है क्लोरोप्लास्ट, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू द सैक्स लाइक स्ट्रक्चर. सैक आर बेसिकली स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर नोन एज द थाइलाकॉइड. अब यहाँ पर यह है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स रखती है, जिसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं. द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, स्टैक या पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स, या जो थाइलाकॉइड का एक दूसरे के ऊपर जो ढेर है, जो पाइल बना हुआ है, इस कॉल्ड ग्रेनम. यानी कि जब थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर, आप जैसे कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो एक पाइल बन जाता है कॉइन्स का, सिमिलर इसी तरह थाइलाकॉइड्स का एक पाइल बनता है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन योर स्लाइड एंड आल्सो ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63. सो यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनम. You can assume it that how we can stack thylakoid. So this is called as granum and the plural is grana. Grana floats in the inner fluid of the chloroplast. अब grana जो हैं basically these are not fixed, they can float in the inner fluid of the chloroplast known as stroma. So the fluid that is present within the chloroplast that is known as stroma, that is discussed in this diagram, or that is shown in this diagram, figure 4.14 chloroplast on the page number 63 of your textbook. So you can see stroma that is light green colored represented in this diagram. So this is basically the fluid that is present within chloroplast. क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस है वो इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है. अब फोटोसिंथेसिस यहाँ पर क्यों टेक प्लेस होगी? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस जस्ट ड्यू टू द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आर बेसिकली द ग्रीन पिगमेंट दैट कैन absorb the sunlight and the process of photosynthesis can be easily carried out. So they contain chlorophyll, the green pigment necessary for the photosynthesis and associated pigments, और उसके साथ बहुत सारे दूसरे पिगमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस के लिए. These pigments are present in the thylakoid of grana. तो अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट के जो पाइल ऑफ स्टैक है, जिसको हमने स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड कहा यानी ग्रेनम कहा, ये उसके अंदर मौजूद होते हैं. यानी कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The second type of plastid is in the plant cells are chromoplast. So जो second type of plastid है हमारे पास वो chromoplast है. They contain pigments associated with bright colors and are present in the cell. अब यहाँ पर जो second type of plastid है वो हमारे पास chromoplast है. अब chromoplast में क्या है? पिगमेंट्स कंटेन
करते हैं ये, दैट आर एसोसिएटेड स्पेसिफिकली विद द ब्राइट कलर्स, यानी बहुत ज़्यादा जो ब्राइट कलर्स हैं उनके साथ ये एसोसिएट करते हैं, एंड आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। अब पेटल्स का जो कलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, अगर फ्लावर्स की हम पेटल्स की बात करें, या फ्रूट कलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड ब्राइट होता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट बेसिकली द कलर ऑफ द फ्लावर एंड द फ्रूट जो है इनके साथ लिंक करता है, और इसमें ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि फ्रूट एंड फ्लावर के लिए यूज़ होते हैं, उनको उनकी कलरेशन के लिए, उनके ब्राइट कलर्स के लिए। सो देयर फंक्शन इज़ टू गिव कलर्स टू these parts and thus help in the pollination and dispersal of the fruit. So the function of the chromoplast is to give color to that part of the plant that is basically fruit and petals, और इसी की वजह से जब कलरफुल पेटल्स होती हैं तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड द फ्लावर, और पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होता है। द थर्ड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट। दिस इज़ बेसिकली द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। कलरलेस होते हैं एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तीन तरह के कंपोनेंट्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं, स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स, दैट आर बेसिकली फूड कंपोनेंट्स एंड दैट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट वेयर द फूड इज स्टोर्ड। और ये वहाँ पर मौजूद होंगे जहाँ पर फूड स्टोर होती है, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जहाँ, प्लांट सेल का वो पार्ट जहाँ पर फूड स्टोर होती है प्लांट की, वहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। So now you can have some questions about plastid. If you have a long question, that write a note on plastid. You can write the whole topic and with its diagram. And if you ask that write the name of 3 types of plastid, तो फिर आप सिर्फ इसकी 3 टाइप्स के नेम लिखेंगे। एंड इफ़ यू आस्क स्पेसिफिकली अ सिंगल टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट राइट अबाउट क्लोरोप्लास्ट और डिफाइन क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सप्लेन इट, और डिफाइन क्रोमोप्लास्ट और एक्सप्लेन इट, एंड द नेक्स्ट वन ल्यूकोप्लास्ट। सो इफ़ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर आप इसमें जस्ट उतना द पोर्शन राइट करेंगे जो कि एक एक जो हमने प्लास्टिड के लिए पढ़ा है, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज़ फॉर द क्लोरोप्लास्ट, एंड द सेकंड वन इज़ फॉर द क्रोमोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज़ फॉर द ल्यूकोप्लास्ट। तो आप उसमें सिर्फ उतना लिखेंगे। एंड इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट स्ट्रोमा, तो फिर आप अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो सेकंड पैराग्राफ में जो थर्ड लाइन है, दैट ग्रेना फ्लोट्स इन द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। सो यू कैन राइट दैट द इनर फ्लूइड इन विच द ग्रेना कैन फ्लोट इज नोन एज द स्ट्रोमा, और उसके साथ आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। एंड इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द थाइलाक्वाइड, सो यू कैन राइट दैट द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू द सैक्स called thylakoid and the stack of thylakoid is called as granum। तो आप वहाँ पे इनको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप अपने बुक पे राइट कर सकते हैं ताकि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें you can have an idea about the questions that can be raised from this topic. Okay students, now you have some homework. First of all, you have to open up your diary, write date, subject, and write down your diary. Learn all the important definition and question discussed in this lecture. So you have to learn all the important definitions that are discussed in this lecture and all the questions that I have discussed with you in this lecture. So you have to learn all these important definition and questions. Okay students, this is the end of the lesson. If you find any difficulty regarding this lecture, you can ask us on WhatsApp. For that, you have to mention your name, grade, subject and lecture number so that you can get a positive response. This is the end of the lesson. Allah Hafiz.